गायत्री कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री गायत्री कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामाथर्वाणि छन्दांसि परब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री देवता तद्बीजं भर्गः शक्तिः धियः कीलकं मोक्षार्थे जपे विनियोगः। न्यासः ओम तत्सवितुर्ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः। ओम वरेण्यं विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै वषट्। ओम धीमहि ईश्वरात्मने कवचाय हुम्। ओम धियो यो नः सदाशिवात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम प्रचोदयात् परब्रह्मतत्त्वात्मने अस्त्राय फट्। मुक्ता वेद्रुमहे मनीलधवलात् छायैर्मुखास्त्रीक्षणैर्युक्तामिन्दुकलानिबद्धमुकुटां तत्त्वार्थवर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयाङ्कुशकशः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्खं चक्रमथारविन्दुयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे ब्रह्मसन्ध्या तु मे पश्चादुत्तरस्यां सरस्वती। पावकीं च दिशं रक्षेत् पावमानी विलासिनी दिशं रौद्रीं च मे पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्तात् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षेत् सर्वांगे भुवनेश्वरी। तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुः पदम्। वरेण्यं कटिदेशे तु नाभिं भर्गस्तथैव च। देवस्य मे तु हृदयं धीमहीति च गल्लयोः। धियः पदं च मे नेत्रे यः पदं मे ललाटके। नः पदं पातु मे मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात्। तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु भालकं। चक्षुषी तु विकारार्णं तुकारस्तु कपोलयोः। नासापुटेर्वकारश्च रेकारस्तु मुखे तथा। णिकार ऊर्ध्वम् ओष्ठे तु यकारस्त्वधरोष्ठके। आस्य मध्ये भकारस्तुर्गोकारश्चिबुके तथा। देकारः कण्ठदेशे तु वकारः स्कन्धदेशके। स्यकारो दक्षिणे हस्ते धीकारो वामहस्तके। मकारो हृदयं रक्षेत् धिकार उदरे तथा। धिकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटिं तथा। गुह्यं रक्षतु योकार ऊरुणीनः पदाक्षरं। प्रकारो जानुनी रक्षेत् चोकारो जङ्घदेशकं। दकारो गुल्फदेशेषु यकारः पादयुग्मकं। तकारव्यञ्जनं चैव देवताभ्यो नमो नमः। इदं तु कवचं दिव्यं बद्ध्वा शत्रून् विनाशयेत्। चतुष्षष्टिकला विद्या अङ्गाद्याखिलपातकैः। मुच्यते सर्वपापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति। ओम इति गायत्री कवचं समाप्तम्।